हेलो बेटा, आवाज आ रही? हेलो। हेलो मोहित, आवाज आ रही है? मोहित, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही सभी को? वॉइस आ रही सभी को? Yes, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, sir. Okay, so in this today's lecture, we will discuss the topic framing and flow control that belong to the data link layer, basically. Here, that is a part of your unit 2. So before going to start, we just see where the data link layer belong in the OSI model. You all know that OSI model is a 7-layer structure here, and the data link layer basically belong to the second position between physical layer and network layer. So it just take the data from the upper layer and transfer to the lower layer that is just below of the data link layer, that is network layer. Yeah. So we can say it just takes the services from the physical layer and provide the services to the network layer. Yeah. Now, so we can say about, as we know that the physical layer basically deals with the transmission of signal over the transmission medium. The data link layer plays the important role for achieving reliable, efficient communication between two adjacent machines. Yeah? It basically deals with frame formation, flow control, error control, addressing, and link management. So, so I will show you the figure here. As you all know, in OSI model, it belongs to the second layer. Clear? So the position of this layer is on the second position, the OSI model, that is after physical layer. It is basically oftenly divided into two parts: logic link control and media access control. So basically जो हमारा डेटा लिंक लेयर है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. Clear? A file. So is it visible to all of you? सभी को दिख रहा है?
Yes, sir. So you can see this layer, basically that is data link layer, belong to what, between physical layer and network layer. So it just take the services from this layer and transfer to the lower layer. Clear? Services will be transferred to the lower layer. So what I am saying, it is conceptually divided into two sublayers: logical link control and media access control. Clear? Now if we talk about the logical link control, you see, it is data link layer basically is categorized into two parts: logic link control, that is LLC, and MAC, that is media access control. These are two sub layers. Okay. So if you talk about LLC, so this sub layer basically is responsible for identifying networks layer protocol and then encapsulating uh, data that is to be transmitted. Clear? So, and when they are about to be transmitted onto the network, or decapsulating data that is being received them when it receives a packet from the network and pass it on to the layer above it. Clear? So an LLC header tells the data link layer what to do with a packet once a frame is received. Clear? जो LLC header होता है, हेडर आप लोगों को पता है जनरली एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है? तो ये डेटा लिंक लेयर में ये बताता है कि जो भी पैकेट या फ्रेम रिसीव हो रहा है उसके साथ क्या करना है, इसको ट्रांसमिट करना है या इसको स्टॉप करना है या डिस्कार्ड करना है, वट एवर इज दैट. क्लियर? So exactly, it just control the link that belong to that frame or packet. Clear? For example, a host will receive a frame and then look into the LLC header to understand that the packet is destined for the IP protocol at the network layer. Clear or not? So then we have media access control, that is IEEE 802.3 standard, belongs to IEEE 802.3, and LLC belongs to IEEE 802.2. Clear? So MAC की हम लोग बात करें तो it defines how packets are placed on the media cable. Clear? कि हमारा जो पैकेट है वो कैसे प्लेस होगा मीडिया केबल पे. Contention media, that is Ethernet access, is first come first serve access, where everyone shares the same bandwidth. Clear? Now, data link layer protocols में कुछ design issues हैं. We have some design issues related to the data link layer control protocol. Clear? So if we talk about the design issues, so you can see we have a few design issues are there. Like first one is the, you can see, okay, so first one is the service provided to the network layer. Clear? This is the first design issue. As you know, the data link layer has to provide a well-defined interface to the network layer, has to determine how the bits of the physical layer are grouped into frames to be sending as one block. Clear? So it has to deal with the transmission error and has to regulate the flow of the frame so that slow receivers are not swamped by fast senders. तो जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क लेयर को, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे अपर लेयर से डेटा रिसीव हुआ, ठीक है, उसको हमें नेटवर्क लेयर तक प्रोसीड कराना है, तो ये बताता है कि हमारी जो बिट्स है फिजिकल लेयर से जो आ रही है उनको हम फ्रेम्स में ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ब्लॉक बाय ब्लॉक सेट कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि कई बार कोई हमारे पैकेट या फ्रेम सोलो ट्रांसमिट होता है, कई बार कोई पैकेट या फ्रेम फास्ट ट्रांसमिट होता है. क्लियर? तो एग्जैक्टली जो सर्विस ये प्रोवाइड करता है कैसे फ्लेम को मैनेज करना है उसको, ठीक है, जिससे कोई फास्ट फ्रेम या कोई फास्ट जो डेटा आ रहा है तो स्लो वाले डेटा को स्वैप ना कर जाए. ठीक है. And second one is the frame synchronization. This is the another service here that may concern with that. So frame synchronization क्या होता है इसमें? The source machine sends data in the block called frame
to the destination machine. Then the starting and ending of each frame should be recognized by the destination machine. Clear? जो सोर्स हमारा है वो डेटा जो सेंड कर रहा है वो फ्रेम्स में सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन मशीन को. तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच फ्रेम, तो ये फ्रेम हमारे ट्रांसमिट कर रहा है, स्टार्ट और एंड जो उसका है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए डेस्टिनेशन मशीन पे, तभी वो प्रॉपरली रिसीव होगा, ये हमारा रिकॉग्नाइज हो पाएगा. अदरवाइज अगर कहीं कुछ चेंज होता है तो वो हमारा पैकेट may get lost. Clear? Synchronization is very important for sender and receiver. So third one is the flow control. In this flow control, the source machine must not send data frames at a faster rate than the destination machine can accept them. फ्लो कंट्रोल का मतलब यही है कि जो भी फ्लो है डेटा का उसको कंट्रोल करना. ठीक है, अगर वो फास्टर रेट से आएगा तो उसको स्लो कर देना या उसको मीडियम कर देना, जिससे हमारा रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि रिसीवर की भी अपनी एक कह सकते हैं आप लोग कैपेसिटी है, उसका भी एक डेटा रेट है जिससे वो रिसीव करेगा. ठीक है, अगर उससे ज्यादा कैपेसिटी का डेटा आ जाएगा तो इट विल जस्ट बी ओवरफ्लो कंडीशन या ओवरवेल. So just to keep that flow up to the mark. Clear? Then we have error control. The errors are made during the transmission from source to destination machine must be detected and corrected. Okay? तो भी errors हमारी create हो रही हैं during the transmission from source to destination machine, उनको detect करना और उनको correct करना. This is another design issue. Error कहाँ आती है? कोई bit corrupt हो जाएगी किसी frame के अंदर, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना एंड देन उसको करेक्ट करना. आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन इन डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल. We have several techniques for that. Yeah, so the fifth design issue is the addressing base, that is on multiple points such as many machines connected together. So the identity of the individual machine must be specified while transmitting the data frame. जब भी आप डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल मशीन की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, must be specified while transmitting. ठीक है. Then we have control and data on the same link. So the data and control information basically is connected in a frame and transmitted from the source to the destination machine. So the destination machine must be able to recognize control information from the data being transmitted. Clear? Then we have link management. This is very important part. Link management. Clear? Link management basically tells about the initiation, maintenance and termination of the link between the source and destination. कहने का मतलब क्या है कि जब डेटा आपका स्टार्ट होगा सेंडर से तो इनिशिएट होगा वो, तो पहला प्रोसेस इनिशिएशन हो गया. कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर से रिसीवर एंड रिसीवर से सेंडर के बीच में लिंक आपका मेंटेन होना चाहिए. कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर फॉर द मेंटेन लिंक. क्लियर? एंड द थर्ड वन इज द टर्मिनेशन. जब ये कम्युनिकेशन हो जाए तो नेटवर्क को टर्मिनेट करना. दीज ऑल बिलोंग टू द लिंक मैनेजमेंट. ठीक है, तो फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ डेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द लिंक. The protocol or procedures are required for the link management. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें what are the services provided to the network layer. Yeah. So the network layer is the layer above the data link layer in the OSI border. So it is supposed to provide services to the network layer. The main service that is to be provided is transferring data from the network layer on the source machine to the network layer on the destination machine. So the job of the data link layer is to transfer the bits to the destination machine so they can be handed over to the network. Clear? Now we have the framing portion that we cover. Okay, so I come to the framing part. That is another important term in this regard. ये सभी को दिख रहा है this diagram? Oh, this topic is visible to all of you. Yes, sir.
कोई भी डेटा फ्रेमिंग का मतलब क्या है, को रिट्रांसमिट करना भी इजी नहीं होता है।